थोड़ा जोश होना चाहिए। मुझे लगता है जब इतनी अच्छी मोटिवेशन वाली क्लास हुई, स्किल के बारे में पता चला, तो उसके बाद मुझे अच्छा सा जोश होना चाहिए था। आपने जोश भरा है या नहीं भरा, तो थोड़ा बताइए तो सही, जोर से कहीं गुड मॉर्निंग करके ऐसा कुछ करके। चलिए एक बार मैं गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, फिर आप भी साथ साथ में गुड मॉर्निंग बोल दीजिए। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। ऐसे जब ऑडियंस हो किसी के सामने, तो बोलने को अपने आप ही मन करने लग जाता है। और ऐसी ऑडियंस के लिए जरूरी है कि अच्छे, बहुत अच्छे स्पीकर्स को बुलाया जाना। बात जब स्किल्स की चल रही थी, एजुकेशन की चल रही थी, टेक्नोलॉजी की चल रही थी और ग्रोथ की चल रही थी, आगे बढ़ने की चल रही थी, तो सोचा कि क्यों सिर्फ जयपुर में रहा जाए, जयपुर के सरहदों से बाहर भी निकला जाए। तलाश करते करते हमारी तलाश एक जगह जाकर खत्म हुई, जिसे इतिहास में ज्ञान की नगरी के नाम से जाना जाता है। बात कर रहा हूँ कलकत्ता की सरजमी की। वो कलकत्ता जहां से सुभाष चंद्र बोस की बात कही, खुदीराम बोस की बात कही, या फिर जो ढेरों लोग वहां से निकल कर आए। और आज का जो ये सत्र होने वाला है, हम वहीं से एक हीरा चुनकर लेकर आए हैं, एक ऐसे विद्वजन को चुनकर लेकर आए हैं जो हमारी समस्याओं को कहें, जो हमारी प्रॉब्लम्स को कहें, ना केवल सॉल्व करने में मदद करेगा, बल्कि इंस्पायर भी करेगा अपनी जर्नी के जरिए। मुझे लग रहा है कि ये जो सत्र होने वाला है, दोनों सत्र पिछले वाले महत्वपूर्ण थे, लेकिन हर आदमी की आदत होनी चाहिए कि अपने को बेहतर कहे। तो कोई भी माँ अपने बच्चे को ही बेहतर बताती है, तो मैं भी अपने सत्र को बेहतर बनाने की यहाँ से आपसे आज्ञा चाहूंगा। एक बात वो किसी ने कही है कि गुरूर है सूरज को अपने हिद्दत पे, तो उससे कह दो कि आज ये कतरा भी तूफान होने वाला है। तो आप जो हैं, जिन्हें जरा जरा चिंगारियां नजर आ रही हैं, वो इस सत्र के जरिए बहुत सारी चीजें अपने जीवन में सीख पाएंगे और उन्हें इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के अतिथि का। तो जोरदार ताली होती है, उनकी ताली में गड़गड़ाहट कलकत्ता तक होगी। नमस्कार तिरस्वी जी, कैसे हैं आप? Namaskar, I'm good. How are you? सुनने के लिए हम बेताब हुए जाते हैं और आप ये खामोश रह जाते हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। Hello, and I'm very happy and excited to be here, definitely.
मतलब सबसे ज्यादा कौन? आपके सामने सबसे ज्यादा सुंदर आदमी, आपके सामने सबसे टैलेंटेड आदमी खड़ा है। मुझे लगता है कि बार मैं आऊंगा तो माथे पे पट्टी लगवा के लाऊंगा कि आई एम द बेस्ट। चिराग जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। हमेशा जिंदगी जितनी आसान तरीके से जी जा सके उसकी नजर आ जाएंगी। और समझ के चलिए जो शख्सियत कलकत्ता से तो अब बताइए,
नमस्ते। हाँ, आवाज आ जी रही जी, है। नमस्कार नमस्कार, इस बार आई है। चलिए, आवाज आई। अच्छा सीरियसली जी, बात जब हम मेंटल हेल्थ की कर रहे हैं तो मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि ये सारे सारे नन्हे नन्हे फूल हैं, इनके अंदर हर एक के अंदर अपनी अपनी खुशबू है। इन्हीं की परिभाषा में पनपने दिया जाए, आगे बढ़ने दिया जाए, हम क्यों इन्हें अपना आकार देने की कोशिश करें, क्यों मेंटल हेल्थ की बात करें? क्योंकि हर एक चीज की चाहे कांटा ही क्यों ना हो, उसकी भी अपनी में नेगेटिव लग रही हो सकती है, वो हो सकता है क्योंकि एक अपना गुण हो, अपनी एक काबिलियत हो। तो मेंटल हेल्थ जैसी चीजें बच्चों से शुरू क्यों की जाए? वेल, बिकॉज बच्चे जब स्कूल में जाते हैं। हेलो, इज इट ऑडिबल? हेलो, हेलो। क्या क्या सीन हो रहा है? हेलो चिराश्री जी, कुछ बोलिए, आवाज। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? प्लीज। आपका माइक पास कीजिए अपने, आपका माइक अपने पास कीजिए प्लीज। हेलो, फिर फोन करो या तो कोई दो मोबाइल रख ले, एक से ना कॉलिंग के जरिए बस में। मुझे लग रहा है कि आज भाग्य मेरे में हेलो। यस, एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ बोलकर जी। चिराश्री जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज भी आपको आ रही है? जी प्लीज। हेलो।
Hello. Namaste and hi, I'm Chirshri and I'm very, very, very happy to be here and talking about mental health. Well, I'm really eager to speak to all of you. वहां से तो नहीं आ रहे, आपके आवाज आ रहे हैं। नमस्कार तिराशी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है अभी। जी जी। कैसे हैं? कलकत्ता के हाल कैसे हैं? कलकत्ता के हाल अच्छे, जयपुर के हाल कैसे है? तो हेलो। हाँ, आवाज आ रही है। यस। सो मेंटल हेल्थ के बारे में स्कूल कॉलेजेस से काम इसलिए करा जा सकता है या फिर करना चाहिए, बिकॉज when we are in school and especially you are attending classes and teachers are telling you things like, oh, you can't do much in your life, or what are you doing, you're wasting your time, or parents are howling at you and they have like sky-reaching expectations from you that you need to do really well in your life, like you really need to be a doctor or you need to be an engineer. And how can you not do well? Your cousin is doing so well, your friend is doing so well. That entire structure makes a child reach a state where the child starts to question their self-worth. They start to seek validation outside, they start to feel worthless, and that's where it all begins. It's literally the stream of all the wounding, and
we don't really need to take care of mental health and fix things if parents, teachers, everybody literally reaches a state of having absolute sense of clarity of how to deal with the students. Because if we are being kind to the students, if we are being softer to them, if we are really being kind to them, if we are really being nice to them, if we understand their point of view, if we start to understand things and see things from their point of view, and understand what all emotional trials and tribulations they're going through if they are not coming to school or skipping school or just do not want to show up or are lacking hobbies or are not being able to focus on their education. If we see these symptoms and start talking to a child actually as a friend and not scold them for what they are saying, not judge them for what they are saying, then we would actually bridge the gap and not really need to fix mental health then, and it would no longer be an issue if the awareness is available at that rate. But unfortunately, that's not available, and children are shrunk in the fear of not really feeling safe. And even at home, at times the family might be dysfunctional, the parents are fighting, the parents are having excessive expectation from the child, the parents are comparing the child, as I said, to others. The child literally reaches a state of not feeling that good. And even often at times the teachers or the student parents even have the tendency to compare a child with another. That is often the stream of jealousy, often the stream of anxiousness amongst children, causing triggers amongst each other. If such barriers could be walked upon and children could be talked to and the transparent relationship could be maintained, then I am sure we would not need a world where mental health needs to be fixed, but it would be something that is a part and parcel of your life. Like, oh, you're not feeling well. Okay, you're upset. Let's talk about it. It would be that normal. I think it's about normalization of talking about how you're feeling. वो जानना बहुत जरूरी, क्योंकि कहते हैं ना कि उम्र एक ऐसी चीज है जो किसी काम को कमाने के लिए चाहिए होती है, और उम्र ही एक ऐसी चीज है जिसका भरोसा नहीं होता। मैं बात वक्त की कर रहा हूँ। वक्त आपके पास कितना है और कैसा है ये कोई नहीं जानता, तो जितना है उसको ढंग से जिया जाए। उसके लिए जरूरी है कि हम अपने समय को बचाएं और किसी ऐसे एक्सपर्ट, ऐसे कोच से मिले जो हमारा गाइड करे, हमारा मार्गदर्शन करे, हमें बताए कि हमें क्या करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक अगला सवाल और मेरे जहन के अंदर जब आ रहा है कि अक्सर हम लोग स्ट्रीम सिलेक्शन की बात करते हैं कि मुझे साइंस लेनी है, मुझे मैथमेटिक्स लेनी है, मुझे आर्ट्स लेनी है, क्या लेनी चाहिए? आपकी नजर से कौन सी स्ट्रीम है वो? What are you good at? What do you love to study? What are you like obsessed with? And if you're not even sure of what you're obsessed with, if you're not even sure of what you really want to study, see the areas that you're interested in life. What would you like to do? 5 years down the line, what would you like to do?
if you really have to go up and show up for your job and get paid, and you know that you have to work at least 9 to 10 hours a day, what would you like to do for those 9 to 10 hours? What are you so enthusiastic about that it really fulfills you from within, and why? So, when you really have these questions answered, it would get more clearer for you to choose the stream. And it's never really about like going for the science stream because it's the best. That's not really how it works, because it's actually about what you are good at. What are you really interested in? Every stream has plethora of career options now, and there are plethora of things that you can do after the completion. So really be kind to yourself and fulfill your desires, because we are in such a paradigm of educational sector that there are several branches opening up. So be it data science, be it UI, UX, be it studies regarding courses which we had never even heard of in the past, about even occult or spirituality. One of my clients, she was telling me that Bhagavad Gita is being included in the school curriculum now. So we are heading towards a phase of revolution. So whether you want to do business analysis, that has streams open now and various sectors open now. MBA has got more sectors open now than we had even 5 6 years down the line. There are studies of quantum physics and colleges actually offering degrees on that. There are courses on project management from graduation level now. You can actually become product designer now, and there are so many options available at this point for every stream. It's not just restricted to studying literature. We have communicative English now, we have comparative literature, we have so many things to study. There is studies of religiosity, and new streams are opening up every year in colleges, because the entire educational system and the structure is understanding the missing link that was there, and having to identify the missing link that was there in the entire educational sector. Every sector is expanding like never before. So whether be it in the fashion industry, be it in, if you want to study and become a scientist, if you want to grow in the field of graphics and designing and VFX, every industry is growing like never before. So the streams are opening up in abundance. So it's time to really be kind to yourself and go for what you would prefer, because the options at this point when you go to the college level are endless. So don't just hold yourself back that I do not want to go for humanities because I would not have scope. That's not true in today's time. There are endless scope for every subject at this point. So allow yourself to follow your heart and do what you want to do, because the options are literally endless. And it's not just in India. Out of India also, there are endless opportunities. In India itself, there are endless opportunities. And with the number of growing colleges and subjects, this is but the time to do what you would prefer and not be dismantled by what society thinks is ideal, because those days are actually gone. That's so 2000s, 2009, 2010. This is 2023. So it's time for educational revolution, definitely. अपनी 20 इनपुट डालने की कोशिश करता है, वैसे तो जगह मिलती नहीं है, मैं अपने इनपुट डालने की कोशिश करता हूँ। 70,000 से भी ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज इस विश्व में बताई जाती है, और करीब 10,000 से ज्यादा ऐसी अपॉर्चुनिटीज जिनके बारे में आपको गाइड कर सकता हूँ। तो आप सोच के चलिए, हमें कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज पता है, मुश्किल से 5, 10, 15, 20, 50 पे आगे सबसे बढ़ जाएंगे।
लेकिन एक चीज के नीचे बहुत सारी चीजें होती हैं। चिराग जी जो कह रहे हैं कि हमें, और वैसे भी आपने एक फिल्म में भी देखी थी, उसमें भी थी कि आपको आपका जो पोटेंशियल है पहले वो देखना जरूरी है। स्ट्रीम कौन सी चुननी है ये आपका मन है वो तय करना चाहिए। मैं कल भी इस मंच के जरिए बात कह रहा था, अक्सर हम लोग गलत तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं चिराग जी की उसी बात को यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। अक्सर हम लोग ये करने की कोशिश जानने की कोशिश करते हैं मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है, जबकि क्या करना और कैसे करना जैसा सवाल हमारी जिंदगी में होना ही नहीं चाहिए। क्या करना है का जवाब आपको आपका इंटरेस्ट देता है। उसने मुझ पे नाराजगी की तो मुझे उसे क्या करना है, गुस्सा मारना है भाई, नहीं मारना है क्या? भाई आपसे कोई लड़ाई करे आप क्या करोगे, प्यार करोगे, क्या करोगे? कोई बताए। हाँ बोलिए, खड़े होकर बोलिए, भाई खड़े होकर बोलते आपको बहुत अच्छे लगते हैं, औरतें भी अच्छी लगती है खड़े होकर बोलती हूँ, बताइए क्या करेंगे? क्या लड़ाई करेंगे? लड़ाई करेंगे, जाहिर सी बात है। और कोई अगर आपसे प्यार कर रहा हो तो आप क्या करेंगे? प्यार करेंगे। यानी आपको क्या करना है ये तो आपका जो मन है वो अपने आप ही बता देता है, उसको जानने की जरूरत नहीं होती है। आपकी जो स्थितियां हैं वो बताएंगी आपको क्या करना है, और कैसे करना है वो भी आपको पता है कि लड़ाई करनी है और ऐसे करनी है, ऐसे तो मेरे से जीतेगा नहीं, मैं जीत नहीं पाऊंगा, तो मुझे ऐसे करना चाहिए। क्यों करना है इसका जवाब ढूंढना चाहिए। तो जब सिराक्षी जी अभी जो बात कह रही थी उसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो इस तरह से कि अभी हमें ये जानना है कि जो भी मैं करने की सोच रहा हूँ तो उसको क्यों करना है। मुझे डॉक्टर बनना है तो क्यों बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है तो क्यों बनना है, टीचर बनना है तो क्यों बनना है? सिर्फ इसलिए कि किसी पेरेंट ने कह दिया, या किसी टीचर ने कह दिया, किसी दोस्त ने कह दिया, अखबार में देख लिया, टीवी में देख लिया, किसी को पैसा देख लिया, रुपया देख लिया, बस इसलिए। मान लिया रोनाल्डो 8 नंबर का जूता पहन के बड़े अच्छे ढंग से खेलता होगा, तो मेरे नहीं आता, मैं वो पहनकर वो जंग नहीं जीत सकता। तो मुझे अपने पांव का जो नाप है ना वो देखना पड़ेगा कि मेरे पांव में किस नाप का जूता आता है। तो हमें ये समझनी होगी कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। और आप निश्चिंत रहिए, आप तो इंटरेस्ट बताइए। मेरा इंटरेस्ट है स्ट्रीम, चिराक्षी जी आपको बता देंगे। जी चिराक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। मैं बातों को थोड़ा सा आगे और बढ़ाऊं यहाँ पर। एक सवाल जो मैंने लिख रखा है, पढ़ लेता हूँ क्या लिख रखा है। वो सवाल लिखा हुआ ये है, ठीक है, कि वो सवाल लिखा हुआ ये है कि उसको पढ़ने से पहले मिस्ताक आदमी साहब का एक शेर याद आ गया। शेर व शायरी करने का शौक है मुझे, मेरा शो भी चलता है डियर साहित्य का, कभी देखिएगा आप, बीच में जब भी मौका मिले प्रमोशन कर लेना चाहिए, कर लेना अच्छा रहता है थोड़ा। नहीं अब और कौन करेगा, मेरे खुद को बोलना पड़ता है कि भाई मेरा प्रोग्राम है, उसको देखा करो, डियर साहित्य अगर आप देखिए आपको अच्छा लगेगा। उसमें मिस्ताक साहब फरमाते हैं कि वक्त के जालिम समंदर में आसानी की परेशानी के साथ डूब जाता है कोई क्यों कितनी आसानी के साथ। हम सब लोग बड़े अरमान के साथ में बड़े होते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, लगता है कि अब 2 कदम चलना भी बड़ा दुश्वार हुआ जाता है। तो ये दुश्वारियां, ये डिप्रेशन, ये एंजाइटी हमारे जीवन में शामिल क्यों होती है? सिराठी जी इसके ऊपर भी बताइए, क्योंकि जब भी किसी को परवरिश दी जाती है तो परेशानियां तो परवरिश में नहीं दी जाती, सबको ये सिखाया जाता है कि आप खुशहाल रहिए, आबाद रहिए, और जिंदगी में वो छूइए जो हम नहीं छू पाए, चाहे वो टीचर हो और चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे बड़े लोग हो, हमेशा ही चाहते हैं कि आप वो करो जो हम लोग नहीं कर पाए। उसके बावजूद ऐसा क्यों होता है कि हम उस समंदर में डूब जाते हैं और हमें लगता है कि बस अब हमें अपने आप को खत्म कर लेना चाहिए। So often at times we get into the zone of feeling like we are stuck and we have no more hope left. And that is when often children think of quitting and feeling like there's no other way out. And it often happens because you allow your emotions to overpower you. At your age, if somebody told me that emotions to overpower you, I would be like, what is she talking about? So I'll simplify it. So whenever there is something going on in your life, there is some turbulences or tension coming in, especially between the age of 15 to say, I would say 20, you get into the phase of not really being sure if you can tell about it to another person. Because during that age, somewhere deep down, the energy of feeling like the person will judge me, I'm not really free to talk about this to the other person. What will the other person think? Which is again the judgment. If I tell this, I'm not really sure if I can talk about it. The other person might scold me. These kind of thoughts
keep playing in your mind, and and it happens to every child, by the way, you're not an exception. So next time you feel like these thoughts are crossing in your mind, stop yourself and be like, okay, this is not like uniquely my thoughts. These thoughts come to every child out there, and I can talk my heart out. You know what? At your age, even I used to think that vulnerability is so weak. You don't be vulnerable, you don't talk your heart out, then the other person will think that I'm not strong enough. But the real strength lies in talking your heart out. The real strength lies in really revealing what's going on. So next time you are stuck and feeling like nothing is working out and your emotions are stronger than anything, and there is something out there which is trying to harm you, and you really feel something is really off and weird in your system, go ahead and talk to a school counselor or talk to a friend or talk to a teacher or somebody at home. Make it normal to talk about mental health. Like we have fever and you have the symptoms of fever, and usually go and tell your mom, right, that I am getting feverish symptoms, give me a medicine. Similarly, if you are having symptoms of feeling like you're overwhelmed and you're not feeling good and everything is so confusing, everything is scattered and you're not seeing hope, go and talk to somebody. No matter what happens in your life, there's a solution. There's a solution to every problem. The other side of the coin of problem is solution. So a problem flips and a solution shows up. So next time you are feeling overwhelmed, scared, anxious, your sensations are overpowering you and you're feeling like your nervous system is damaged. By the way, that's what happens when you have anxiety. You need to go and talk to somebody else. You know what happens if you do not talk and keep your energy and emotions submerged? Well, diseases start to show up. That's how scary holding on to anxiety or depression is. Because if you are holding on to anxiety or depression, or a turbulence is going on inside your mind and you're trying to hide it and not really talk about it, that sensation starts to spread all across your body, and sooner or later it gets numbed out, and that's where diseases start to stream up in your body. It is that serious. So next time you don't feel good, go ahead and talk about it. Or you can start maintaining journal. Just write down how you feel every day, what all experiences you had every day, and focus on ensuring that at the end of the day, if there is something inside of you which is not feeling good, you need to ensure that you talk it out to somebody instead of holding on to it. कौन सा पढ़ूं? कई सारी याद कर रखे। चलो फिर भी एक शेर में पढ़ता हूँ कि दाग दहलवी साहब फरमाते हैं शेर के अंदर कि दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, जो रंज की घड़ी भी खुशी से गुजार दे। इस दाग दहलवी साहब के जो शेर की जब हम बात कर रहे हैं, तो वो मैंने यहाँ इसलिए याद है कि अगर शिलाशी जी ने जिस बात को कहा कि जिंदगी में उतार चढ़ाव कहें और चीजें कहें, तो बहुत सारी चीजें ऐसी आती है जो हमें झुकाने की कोशिश करती है, लेकिन हमने अपने आप पे यकीन करना होगा और परवरदिगार से ऊपर वाले से या हमेशा जो गुजारिश करनी पड़ेगी, जिससे भी हम लोग, मैं किसी ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी ऐसी चीजें, वो आप माता पिता हो सकते हैं, प्रकृति हो सकती है, कोई भी ऐसे होते हैं, उनसे ऐसे ब्लेसिंग्स लीजिए कि मुझे ऐसी हिम्मत, ऐसा हौसला दे कि मैं अगर मुश्किलें आए तो उनको भी खुशी से गुजार दूं। अच्छा, एक सवाल और मेरे यहाँ पर आ रहा है सिराशी जी की, ये जमाना है और जमाने में आजकल तो बहुत ही ज्यादा देखने को जो मिल रहा है कट थ्रोट कॉम्पिटिशन जिसे हम लोग कहते हैं। हर आदमी चाहता है कि मैं आगे निकल जाऊं और दूसरे को शायद पीछे ही छोड़ दूं। ये कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट जरूर है, ये अभिमान है जो कि परेशान भी करता है हमें भी और दूसरों को भी। तो जब हमारी इर्द गिर्द इस तरह के लोग ज्यादा हो, तो बहुत ज्यादा नेगेटिव हमें अप्रोच करने की कोशिश करते हो, डाउन करने की कोशिश करते हो, तो उन लोगों के साथ हम लोग किस तरह से व्यवहार करें और अपने आप को आगे की तरफ लेकर जा सकें?
So if somebody is trying to bully you and make you feel like you're not good enough, you're not worth it, yes, it affects your mental health again. Yes, it might make you feel like you're not having that motivation left, you don't have that hope left to go ahead and show up for yourself again. So you must know that if somebody is bullying you or showing you down, there is something in you which is so amazing, which is intimidating the other person. So if you are someone who's so amazing and is so great, who is triggering the other person, do you think you should honor yourself more? Well, I definitely do think you should. And you need to start respecting yourself more and loving yourself more. So, what do I mean by loving yourself more is that every time somebody is bullying you and you're feeling triggered, the part of you which is getting triggered in your heart, simply sit with that part, literally like this, as if you're hugging yourself, and make yourself feel like you are safe, you are good enough, you are here to accomplish big in life. And because you are here to accomplish big in life, you are experiencing this turbulences. You got this. I am with you and I honor you. You are amazing. Do this particular exercise with yourself every time. If somebody is making you feel turbulent, you're feeling anxious, and someone is being a threat to you. And talking about competition, make yourself your only competition, because every time you are competing with the other person and focusing on the other person is doing their work and they are focusing on themselves and they are escalating. Your focus is, oh my god, they escalated this much, now they escalated this much, now they are here, this is their next move. What is happening is that your focus is on them, your focus is on their growth, and their focus is on their own growth. And that's why they are growing, and you are looking at that person and becoming jealous, having hindrance, having that competitive vibe. But if you start to focus on you, if you start to make yourself the competition, that I am my own competition and every day I must focus on the better version of myself I can become. And at this moment, you can show up in the best possible version that you are in the now based on all the experiences you've had till now. So you are doing perfectly fine at this point of time, and next moment is your youth to do even better. So you are the only competition, and when you focus on that, and when you focus on making your current state as the point of motivation to do even better in the next moment, you are setting up for victory, my friend. तो वो कैसे ठीक किया जा सकता है? समय की थोड़ी अपनी समस्याएं, अगर समस्याएं ना होती तो मैं आपसे बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें करता, लेकिन आपने अपने व्यस्त समय में से हमारे समय निकाला, और हमारे बच्चों का तो क्या ही क्या, साथ साथ में आपने मेरी भी जो ज्ञान चक्षु खोलने की कोशिश, ज्ञान इसलिए लगा रहा हूँ कि अब आपके जरिए ज्ञान मेरे अंदर हाँ शामिल हो गया है। तो अब वो ज्ञान चक्षु, पहले सिर्फ चक्षु थी, आंख थी, तो मुझे विज्ञान देने के लिए और इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए कि ये सकारात्मकता, ये पॉजिटिविटी सबके अंदर बढ़ती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में हमारे सभी दर्शकों से और हमारे जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, जो लाइव जो स्क्रीन के जरिए यहाँ पर सुन रहे हैं, क्योंकि अब इस वक्त मुझे लगता है कम से कम हजारों की तादाद के अंदर 35 वेन्यूज पर सारे प्रोग्राम को देखा जा रहा है, तो वहां के जरिए हजारों बच्चे इस चीज को सुन रहे होंगे। एक बात हमेशा याद रखिए, जो मैं अक्सर अपने लिए कहता हूँ, मैंने टेबल पे चिपका के रखी हुई है, कि हम वो नहीं जो करते फिर मंजिलें तलाश, हम चल पड़े तो मंजिलें कदमों में मचल पड़े। तो अपने आप यकीन रखिए, अपने आप पर यकीन रखते हुए उस मकसद पे यकीन रखिए जो आपके दिमाग के अंदर घूमता है। उस मकसद को आप पा सके, आपकी जिंदगी में खुशियां आ सके, इसी सुख की, समृद्धि की कामना के साथ आज इस कार्यक्रम के लिए इजाजत चाहूंगा, और उम्मीद करूंगा फिर आप किसी मंच पे इसी तरह जुड़ेंगे और आपसे मार्गदर्शन लेंगे और अपने जीवन को
आसान बनाएंगे। आज आपके जरिए हमें अपने जीवन को आसान बनाने के लिए जो टिप्स मिली हैं उसके लिए मैं हृदय से हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद कर सकता हूँ। ज्ञान के लिए सिर्फ यही चीज मैं दे सकता हूँ आपको, मेरा प्रणाम, मेरा आभार, मेरा अभिनंदन। तो मेरा आभार, मेरा अभिनंदन और मेरा प्रणाम स्वीकार करते हुए इस कार्यक्रम को समापन करने की आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।